हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello, my dear students and friends, welcome back. Let's talk about conditional sentences in past tense. तो past tense में conditional sentences कैसे होते हैं? Okay, suppose I say, अगर मैं दिल्ली जाता तो तुम्हारे लिए एक कैमरा लेकर आता. It means I'm just expecting I expected to go to Delhi in past to bring a camera for you, but I didn't go to Delhi to bring a camera for you. It's a conditional कि मैं जाता दिल्ली तो तुम्हारे लिए कैमरा लाता. So remember that in that past conditional sentence we always use past perfect tense and then subject would have plus V3. So the formula is that past perfect tense plus subject plus would plus have plus V3 plus object. This is the formula. Past perfect tense plus. So अगर मैं जाता, if I had gone to Delhi, comma, if I had gone to Delhi, I would have brought a camera for you. अगर मैं दिल्ली जाता तो तुम्हारे लिए कैमरा लेकर आता. If I had gone to Delhi, I would have brought a camera for you. And if I had, so instead of that, you can use had I gone to, and same sentence. Had I gone to Delhi, I would have brought a camera for you. So this is a past conditional sentence. Let's take one more example. It may be used in passive voice. अगर इस मकान की मरम्मत पहले हो गई होती तो ये मकान गिरता नहीं. इस मकान की मरम्मत पहले हो गई होती तो ये मकान गिरता नहीं. It means if this is passive voice, अगर इस मकान की मरम्मत की गई होती है ना, तो if this house had been repaired, if this house had been repaired before, this house would not have collapsed. If this house had been repaired before it, instead of that, because we cannot repeat this house again and again, so you can use it wouldn't have collapsed. तो अगर इस मकान की मरम्मत पहले हो गई होती तो ये मकान गिरता नहीं. Okay, now next example in past tense. Some of the conditional sentences, they may be in any tense.
present tense, past tense और future tense, but they are never true. ऐसे conditional sentence जो सच नहीं होते मगर हम बोलते हैं, and these sentences may be in any tense, present tense, past tense and future tense. अगर जैसे मैं बोलूं, मैं एक सेंटेंस को तीनों टेंस में बोलता हूं, यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस कमरे में अगर शेर आ जाए तो सब भाग जाएंगे। तो ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का। आ जाए तो सब भाग जाएंगे। अगर इस कमरे में शेर आ जाता तो सब भाग जाते, ये पास्ट में हो गया। तो ये कभी सच नहीं हो सकता, ये किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये सेंटेंस जो होता है दैट इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 and plus object. We use that structure to make it. अगर इस कमरे में शेर आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनता है, हो किसी भी टेंस में। इफ अ लायन, तो पास्ट में बनाएंगे केम इनटू दिस रूम, ऑल वुड फ्ली। अगर इस कमरे में शेर आ जाए तो सब भाग जाएंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर आसमान गिर जाए तो सब मर जाएंगे। इफ स्काई fell down, all would die. If the sky fell down, all would die. तो ये past conditional sentences होते हैं. If you like this video, please share it with others. And if you think you want to learn English with me, spoken English or preparation for any interview or for any exam, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video. Thanks for watching that video. Thank you.